morning, everybody. Dear friends, after our long wait is going to be ended with the entry of our guest, Dr. Rahul Joshi sir, a leading homeopath and professor of homeopathic bacteria medica from Mumbai. Dr. Vishal sir, Vice President, Sri Shamraji Arogya Seva Trust. Dr. Khanna sir, Principal, SSMC. Let us accompany with a big hand. Thanks, sir, and thanks to all of you. Dear friends, everybody, Happy New Year. This New Year starts with a fresh joy and life filled with the peace. May you get warmth, togetherness, and prosperity. May this coming year add lots of opportunities and thrill to your life. Happy New Year to all of you and your family. Friends, our today's occasion, I, Dr. Kashba, and my colleagues, Dr. Switi Vyas and Dr. Ansari sir, on behalf of Sri Shamraji Homeopathic Medical College, heartily welcomes to our guest, Dr. Rahul sir, Dr. Vishal sir, Principal Dr. Khanna sir, all teaching staff, all interns doctor, all my dear students and all my non-teaching staff. We are very thankful to our guest for their presence over here in our scientific seminar, Homeopathy, the Simple Art of Miraculous Healing. Friends, Dr. Rahul sir is an eminent homeopath, trained versatile singer, teacher and motivator. He has a good relation and interaction with lots of celebrities. For this, we have to show one short video. Let us see. This video is prepared by our all-in-one, all-rounder, Professor Dr. Keush Soni. His hospital, the fully AC. संगीत से शास्त्री, म्यूजिक क्लिनिक, Maharashtra CM Uddhav Thackeray ji and family. With Bala Saheb Thackeray ji. With legend actor Jitendra ji, father of Ekta Kapoor, Balaji. Bollywood playback singer Suresh Vadkar ji. With Sudesh Bhosle ji, Bollywood playback singer. With Rup Kumar Rathod, Indian musical director and playback singer.
presented by my friend Dr. Kehul Soni. जोरदार तालियों के साथ केवल भाई का भी स्वागत. Thank you, sir. Friends, Dr. Rahul sir has done MA in classical music with distinction and learning music since last 17 years. He has learned from Kalyanji Bhai and O.P. Nair, Pandit Madhar Bakhande, P.P. Narayan Rao Bodas and P.P. Janorikar. His father, Dr. Prakash Joshi, has been his biggest inspiration. Blessed with a sonorous voice quality, he was Mr. Pune Talent and Citadel website Mr. Pune runner-up in 2004 and has stint in modeling. He has also anchored Antakshari, Hello Dr. Yuva Chetana, Anwan Swat and WASSP Mumbai Youth. Recently, Nadim Shravan Prem attended Rahul's program and was all praised for his versatility. He is known as a versatile singer and sings the songs of almost all singers from Saigal to Sonu Nigam. He has an amazing range of 3 octaves and singing is his passion. He has shot to fame with the recent Asian Paints Barkha 8 featuring Ranveer Kapoor. He has given playback to the superstar. The ad became viral and has crossed 20 lakh views in 7 days itself. Singing a song as Bollywood singer with many eminent personalities like Suresh Vadkar, Kalyanji Anandji, Kavita Krishnamurthy, etc. He is a Sangeet Vishard and top Mumbai University music exam twice. So lots of energy. For that, I remember one quote. अपने से जुदा मत समझो, आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो. अपने से जुदा मत समझो, आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो. और ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, और ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये मेरा इश्क है, तुम इसे नशा मत समझो. Thank you, friends. Now I hand over the mic to my colleagues, Sweetie. Thank you, sir. Good morning, all dignitaries, guests, teaching staff, non-teaching staff, my students. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here. It has become a regular aspect and part of Sri Shamraji Homeopathic Medical College to organize this academic program, and that is seminar, to educate students, teachers and show the miracle of our homeopathic medicine, how they work. Now, I invite guest of today's function with a request to come on to position and occupy the distinguished chair. I invite Dr. Rahul Joshi sir to please come on to the stage. Yama will go and comfort the chief guest. Now, I invite Dr. Vishal Soni sir, Vice President of Sri Shamraji Homeopathic Medical College, Arogya Seva Trust, to please come onto the stage. Now I request Dr. Khanat sir, Principal of Sri Shamraji Homeopathic Medical College. Ankita will go and comfort the Principal sir. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Give us wisdom to make this world a better place. May all human beings live in harmony
with nature and other forms of life. May the darkness of ignorance be swept away. So I request all dignitaries for lamp lightning and Saraswati Puja. Thank you, sir. Prayer works wonder. Prayer should spring from the heart, thinking of a supreme power beyond all human inadequacy is a kind of auto-suggestion. So I request Divya, Maitri and group for prayer song. Devi
Thank you, Divya, Maitri, Sejal, Archana, for reciting a beautiful prayer. दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. Friends, our guest Dr. Rahul Joshi sir is one of the world's most renowned and eminent homeopathic physician, a trained versatile singer, teacher and motivator. His passion and love for homeopathy shines through his outstanding academic achievement globally. He is known for his ability to make learning fun. Students enjoy his unique classical approach to homeopathic field. He is MD in homeopathic medicine and honorary homeopath to the Governor of Maharashtra and Police. Let us give a big hand. He is practicing at Malabar Hill and Charni Road, Mumbai. He is an eminent homeopath and teacher attached to Saifi Elizabeth, Larsen and Toubro and Police Hospital. He is the honorary professor in CMT Homeopathic Medical College, which is attached to different medical universities. He is also visiting faculty in many colleges. He is eminent speaker and delivered seminar on many national and international stages. Friends, as his passion and love for music and homeopathy, he has started a unique organization of music and medicine named Music Clinic to promote good health through music and has influenced more than 7 lakh people in last 6 years. He has also conducted lots of programs and workshops in schools, colleges, old people homes, jails, police departments, corporate government organization, Raj Bhavans, Mantralaya, public program, cultural organization. All sections of the society have been touched by this program. His ambition is to create a happy world and create a transformation in the world with the music. So this is the short introduction of our guest. मैं कुछ नहीं कहूँगा लेकिन कुछ तो कहूँगा कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर राहुल सर का जो मिशन है वो पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Thank you, sir. Now I request Dr. Ansari sir to please convey our program. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग स्टेज की तरफ देख रहे हो तो मुझे आपकी तरफ से इनके लिए 2 लाइन याद आ रही है। फलक से उतरकर सितारा तुम्हें सलाम करे, फलक से उतरकर सितारा तुम्हें सलाम करे, हर एक लम्हा मोहब्बत का इंतजाम करे, चमन से कह दो तो बहारों का इंतजाम करे। चमन से कह दो कि बहारों का एहतमाम करे, हर एक फूल की खुशबू तुम्हारे नाम करे, चमन से कह दो कि बहारों का एहतमाम करे। अब ये तो हो गया कि आप जब स्टेज की तरफ देख रहे हो तो आपकी तरफ से अब हमारे मेहमान और हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे चहेते प्रिंसिपल सर जब आपको देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं? वो तीनों के मन में सिर्फ एक पिक्चर का टाइटल याद आ रहा है, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम मुंबई शहर के जाने माने होम्योपैथ और
सिंगर, बॉलीवुड से कनेक्टेड सिंगर, ये होम्योपैथ का ही माइंड हो सकता है जो बॉलीवुड तक पहुंच सकता है। ये फिर से एक बार कहूंगा, ये होम्योपैथ का ही माइंड हो सकता है जो बॉलीवुड तक पहुंच सकता है और बॉलीवुड में पहुंचने के बाद होम्योपैथी को फैला सकता है। उनके पीछे नंबर लगने वाला है डॉक्टर केयूर सोनी सर का। उनके लिए भी 2 लाइन है कि हम किसी से कम नहीं, चाहे किसी के अंदर कितना भी दम हो, लेकिन हम किसी से कम नहीं। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, जोशी साहब के लिए तवज्जो चाहूंगा सर। ऐसा लग रहा है सेमिनार कम मुशायरा चल रहा है। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन खिलखिलाने लगे। तो इसी शायरी के साथ मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर डॉक्टर विशाल सोनी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर राहुल जोशी सर का खैर मकदम करे, स्वागत करे, मरहबा कहे और मैं उनको आमंत्रित करता हूं फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ डॉक्टर राहुल जोशी सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब इसके बाद फिर 4 लाइन हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर डॉक्टर विशाल सोनी सर के लिए। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। मंच रोशन होता है और जगमगाहट मिलती है। मंच रोशन होता है और जगमगाहट मिलती है। डॉक्टर विशाल सर के आने से कॉलेज को रोजाना एक मुस्कुराहट मिलती है। डॉक्टर विशाल सर के आ जाने से कॉलेज को रोजाना एक मुस्कुराहट मिलती है। इसी शानदार 4 लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चहीते और आप सबके चहीते खनाज सर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर विशाल सर का और खैर मकदम करें, फेलिसिटेशन करें डॉक्टर विशाल सर का, वाइस प्रेसिडेंट श्री साम्राज्य आरोग्य सेवा ट्रस्ट। मंच पर विराजमान और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खनाज सर, जिनका हमने हमारे इस महोत्सव में बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और बहुत ही प्यार से हमने उनको कहा, बहुत साल पहले हिंदुस्तान में एक बच्चे का जन्म हुआ और उनके माँ बाप ने उनका नाम भी रखा विद्याधर।
उनका नाम रखा विद्याधर। तो हमारे विद्याधर खनाज सर का स्वागत करने के लिए, लेकिन उनसे पहले उनके लिए भी 4 लाइनें कहूंगा। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने तो ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने तो ऐसे लोग बहुत ही कम बनाए हैं, लेकिन जिन्हें खूबसूरत बनाया है उन्हें आज हमारी महफिल में बुलाए हैं। उन्हें आज हमारी महफिल में बुलाए हैं। हमारे एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर वर्मा सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द डाइस टू फेलिसिटेट डॉक्टर विद्याधर खनाज सर। थैंक यू सर। हमारा श्यामला जी महोत्सव जनवरी 2020 की शुरुआत में शुरू हुआ, यानी 1 जनवरी को, और आज हम इस सेमिनार के साथ सर हम एनुअल डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे होम्योपैथी का फ्रेशर डे और फिजियोथेरेपी कॉलेज का फ्रेशर डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के अंदर एक खास इंडिविजुअलिटी ये है सर, होम्योपैथिक लाइन में कहूंगा इंडिविजुअलिटी, एफोरिज्म 82 ये है कि इस साल हम लोग हमारा 25वां साल पूरा कर रहे हैं। सिल्वर जुबली हमारे कॉलेज की, जिसके आप इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस 25वें प्रोग्राम में आप भी शामिल हैं और सर आप भी शामिल हैं। 1 दिसंबर 1994 को वो दिन भी थर्सडे था, तो कॉलेज का पहला दिन था और एक बहुत ही सुनहरा सपना लेकर डॉक्टर राजेश भाई सोनी सर ने एक नई शुरुआत एक ट्राइबल एरिया में शुरू किया और इस सफर को उन्होंने बहुत मुश्किलों से तय किया और उसके बाद बहुत सी तपिश को झेला और बेमौसम बारिश को बर्दाश्त किया और मुसीबत भरे दौर से कॉलेज को निकाला और गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कॉलेज को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे गुजरात में हमारे कॉलेज का बहुत ही ऊंचा नाम है। जो कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, ये सुना है, लेकिन हमने तो ये देखा है कि राजेश सर के साथ में रहते हुए विशाल सर ने हर एक चीज को सीख लिया कि कॉलेज को कैसे डेवलप करना चाहिए, कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कॉलेज को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए और कॉलेज के कदमों में हर कदम पर कामयाबी चूम रही है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर विशाल सोनी सर पर, जो आज हमारे इस ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर विशाल सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस मंच पर आए और डाइस पर आए और 2 शब्द इस मौका पर कहेंगे। गुड मॉर्निंग मित्रों, શામળાજી મહોત્સવના આજે 10 દિવસ પૂરા થયા અને આપણે અહીંયા સૌ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત છે। શ્રી શામળાજી આરોગ્ય સેવા ટ્રસ્ટ ડોક્ટર રાહુલ જોશીનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે કે જે બોમ્બેથી આપણા ત્યાં આજે પધાર્યા। મને ખનત સાહેબે વાત કરી કે ડોક્ટર રાહુલ જોશી
એ હોમિયોપેથી ડોક્ટર છે, તેની સાથે સાથે બોલિવૂડ સિંગર પણ છે. તો મેં તૈયારી એમની વાત માની લીધી અને મને થયું કે આપણી કોલેજમાં પણ ખૂબ ટેલેન્ટેડ સ્ટાફ છે, સિંગર છે, તો એવી મજા આવશે એમને પણ અને સ્ટાફને પણ કે કંઈ નવું શીખવા મળશે. તો તાલીઓથી વધારીશું આપણે રાહુલ સરને. સ્ટેજ પર આપણા બિરાજમાન પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર ખરસ સર, સ્ટાફ મિત્રો અને આ શામળાજી મહોત્સવની ચાંદ લગાવનાર ડૉક્ટર કેવું સોનીને ખૂબ તાલીઓથી વધારીશું કે રાત દિવસ એક કરીને આ ફંક્શનની જે રોનક વધારી છે. તમે આજે જોયું હશે બેનર, આઈ કાર્ડ, આપણા જે સર્ટિફિકેટ જે ઇસ્યુ થયા એ બધા જ એક રાતની અંદર જો તૈયાર કરનાર હોય તો ડૉક્ટર કેવું સોની. હવે રાહુલ સરને કંઈ બહુ સમય ન લેતા અહીં ટૂંકમાં પરિચય આપી દઉં. શ્રી શામળાજી આરોગ્ય સેવા ટ્રસ્ટની સ્થાપના 16/7/1993 ડૉક્ટર રાજેશભાઈ મારા ફાધર થાય એમને શરૂ કરી હતી. એમનો એક જ વિઝન હતું કે ગોધરાની અંદર હું એવી કંઈ વસ્તુ કરું. ગોધરામાં MLA MP ઘણા હતા, પણ એમને કોઈ વિચાર ના આવ્યો કે ગોધરાની અંદર હું કશું કરું તો જેથી ગોધરાની પ્રગતિ થાય, વિદ્યાર્થીઓ બહારથી ભણવા આવે. જ્યારે 1993માં ગોધરામાં કોલેજ શરૂ થઈ ત્યારે ઓનલી ફોર ગુજરાતમાં 6 કે 7 કોલેજ હતી. એમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ઓનલી ફોર 2 કોલેજો. આજે ભલે 26 કોલેજો થઈ હશે, પણ એ બધી કન્વર્ટ થયેલી કોલેજો છે. એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ના ચાલી અને એમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. જ્યારે આપણે ફાઉન્ડેશનથી એક જ ધ્યેય હતો કે હોમિયોપેથિકને આગળ વધારવાનો. તો આપણે સૌ સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં ડૉક્ટર રાજેશભાઈ સોનીને ખૂબ તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું કે ગોધરાની અંદર એમને જે સ્ટોન મજબૂત મૂક્યો આપણે થયું હાજર છે. એમને ખાસ ધ્યાન કરી ગયો દરેક ફાઉન્ડેશનની અંદર અને એમનું સપનું હતું કે શામળાજી કોલેજનું નામ રોશન થાય, પ્રગતિ થાય અને વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ દૂરથી ભણવા આવે છે એમને સારું શિક્ષણ મળે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજું 10 દિવસ સૌને મજા આવી હશે કે આજે 25 વર્ષ પછી આવું ઓકેશન મળ્યું, બરાબર ને? અત્યાર સુધી આપણે સેમિનાર કર્યા, એન્યુઅલ ડે ફંક્શન કર્યા, સ્પોર્ટ વીક કર્યું, પણ આ જે 10 દિવસની જે જર્ની થઈ એની અંદર એવું લાગ્યું કે 10 દિવસ બહુ જલ્દી પતી ગયા આપણા માટે. વિદ્યાર્થીએ પણ ખૂબ જ મહેનત કરી. તો આજે ફનફેર થયું, સ્પોર્ટ્સમાં તમે લોકો સારો ભાગ લીધો, એ સારું જ છે. ભણવાની સાથે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જો હશે તો જ આપણું ફ્યુચર સારું છે. તો જય શામળાજી, જય હોમિયોપેથિક. ઓલરેડી આપણી 1 કલાક ફંક્શન લેટ ચાલે છે, તો વધુ સમય આપણે રાહુલ સરને સાંભળીશું. અને મેં રાહુલ સરને સવારે જ વાત કરી કે વિદ્યાર્થીઓને સારામાં સારું હોમિયોપેથિક તરફ વળે. એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ તો કરતા જ હોય છે, પણ હોમિયોપેથિક શું છે અને એની હવે આવનારા સમયની અંદર કેટલી ડિમાન્ડ છે એ ખાસ વિદ્યાર્થીઓને સમજ પાડે કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ સારા ડૉક્ટર બને. જય હોમિયોપેથિક, જય હનુમાન. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू वेरी मच सर. अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा होम्योपैथिक जगत के जाने माने मशहूर नेशनल लेवल की पर्सनालिटी जिन्होंने एक रिपर्टरी भी कंपायर किया, बनाया, और हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है और धीरे धीरे हमारे कॉलेज को प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहे हैं. वो उन्होंने ही विशाल सर से परमिशन लिया कि एक महोत्सव होना चाहिए, और इस महोत्सव में विशाल सर ने उनको भी परमिशन दिया कि ठीक है आप नए नए कुछ अरेंजमेंट भी करो. तो हमारे स्टूडेंट ने मिस मैच डे इंजॉय किया, हमारे स्टूडेंट्स ने फन फेयर डे इंजॉय किया, हमारे स्टूडेंट ने हेयर स्टाइल डे इंजॉय किया, जिसमें सर मैं भाग नहीं ले सका है. काश उसका भी मैं पार्टिसिपेंट होता तो शायद 3rd या 4th तो जरूर आता था. तो ऐसे बहुत से इवेंट्स सर ने नए नए इम्पोज किए हमारे यहाँ पर, और स्टूडेंट को जो है अच्छा एंजॉय कराया. और इतना एंजॉयमेंट मिलने के बाद
जब हम अभी 16 तारीख से कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो शायद ही कोई लड़का सर एब्सेंट रहेगा, क्योंकि इतना एंजॉयमेंट हो गया है कि आप हर स्टूडेंट का मन हो रहा होगा, स्पेशली फाइनल ईयर वालों का, कि आप कुछ रिपोर्टरी पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर वालों का कुछ एनाटॉमी और धनतेज सर का फिजियोलॉजी होना चाहिए। सेकंड ईयर वालों का केयूर सर का पैथोलॉजी और केयूर सर का फार्मेसी होना चाहिए जो है। और साथ ही साथ अगर हम नहीं आए तो विशाल सर का गुस्सा भी होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर हमारे खनाज सर आ जाते हैं, ठीक है फोन करो उनको, जब तक तुम्हारा पेरेंट नहीं आएगा जब तक तुम्हारे को कॉलेज में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। अब ये माहौल आने वाला है दोस्तों, आज का आखिरी दिन है, इसलिए अब हमको हमारे ट्रैक पर आना है। और ट्रैक पे आने से पहले अब हम उनको सुनने जा रहे हैं जिनके पास हमको जाने की जरूरत ना पड़े कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, या सर मुझे जो है घर जाना है, या सर उन्होंने मुझे कहा है कि आपका साइन लेकर आओ तो क्लास में बैठने देंगे। आज तक तो आप हम सब आपके फ्रेंड्स रहे, अब जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो अब हम आपके टीचर हो जाएंगे और विशाल सर हमारे बॉस जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो खनाज सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा टू से द फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गुड मॉर्निंग। So I welcome all my dear students, respected Vice President Vishal sir, today's chief guest and speaker Dr. Rahul Joshi, all my dear colleague teachers, staff, non-teaching staff. As explained by Dr. Ansari sir, last 10 days we are celebrating different activities as extracurricular activities. As a part of Mahotsav only, one co-curricular activity also arranged is academic seminar. But when Vishal sir asked me to call someone, only one name I suggested, Dr. Rahul Joshi. The reason behind, because you people, so many of you people are already listening from our expert teachers also. Some are attending the seminars outside in Baroda, Ahmedabad, etc. But I thought the person should not be only the person who will come and teach again something about the homeopathy. But beyond that, what is there? So many activities he is doing. Once we met 10-15 years back, that time I was also examiner and Rahul was also examiner there, and the whole night he was singing and asking me, sir, how was this song? How was this song? Likewise. And every year we are meeting at Kolhapur, so I selected this name only, and with my one phone he agreed to come to our college. Now if afterwards you can be a friend of Rahul Joshi on Facebook and just watch how what different activity he is doing, plus how much he is traveling also. This last week only he traveled Ahmedabad twice, Kolkata, and so many places, and then Godhra. Yesterday evening also there was the program, followed by he boarded in the train. So this energy level I like very much. For this energy, once again applause of class. And what I want to tell,
you all should be. Actually, I am very much thankful to all the students and teachers and etc. for taking active participation. There are many students to whom we observed that they took the participation in each and every activity, irrespective of whether they are getting the number or not. Every activity they participated. I am very much happy for this. This will be the memory throughout the life. Likewise, you develop yourself. Vishal sir is there. All senior teachers are there. New junior teachers are also came with many ideas. With all this material, with all their knowledge, you develop yourself and try to become a good homeopathic physician. So with this, I want to invite directly Dr. Rahul sir to start the seminar.